बनी वृषभानु नंदनी आजू, बनी वृषभानु नंदनी आजू, भूषण वसन विविध पहिरे तन, भूषण वसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजु, बनी वृषभानु नंदनी आजु। हाव भाव लावण्य भ्रुकुटी लट, हाव भाव लावण्य भ्रुकुटी लट, हरत जुवती जन पाजू, हरत जुवती जन पाजू, बनी वृषभानु नंदनी आज, ताल भेद औधर सुर सूचत, ताल भेद औधर सुर सूचत, नूपुर किंकिनी बाज, नूपुर किंकिनी बाज, बनी वृषभानु नंदनी आज, नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नीको बन्यो समाज, नीको बन्यो समाज, बनी वृषभानु नंदनी आज। जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत, हित हरिवंश विलास रास जुत, जोरी अविचल राज, जोरी अविचल राज, बनी वृषभानु नंदनी आज, बनी वृषभानु नंदनी आज। जय श्री हित हरिवंश। जय जय श्री हित हरिवंश, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, श्री श्री राधा रमणो जयति। लेट अस रिमेंबर Chaitanya Mahaprabhu first. Every day I am still saying Chaitanya Mahaprabhu, so you must be knowing with Chaitanya Mahaprabhu what is the form. So we gather our minds wherever that is right now. Let's not be distracted by anything. Close our eyes, get our minds on the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, what is he doing? He has raised his hands. He's singing Hari Nam Sankirtan. He's singing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And he's surrounded by all his associates. And while he is ecstatically chanting like this, we can see all the ecstatic symptoms on his body: trembling, choking, his voice choking many times. He's stunned many times, losing consciousness sometimes. Most of the times when you look at his face, it is shining bright in that love of Krishna. And all that love is flowing in the form of tears from his eyes. And it is flowing all the way from his eyes through his cheeks and goes down on his chest. And then from there it just goes down on the ground. And the ground is soaked with the tears of love. We take this dust on the ground
and we apply to our foreheads, and we bow down to Chaitanya Mahaprabhu and all his associates who are doing this ecstatic Sankirtan. निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नि प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरिति रुच्चै वदन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झर्जयैः सिञ्चन्तं मुरवीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः. With the same attention, now we take our mind to Vrindavan, to Barsana Dham, to Yamuna, to Radha Kund, to Sham Kund, Giri Govardhan. Radharani is sitting in her palace, and the wind is blowing in Barsana, and it is carrying the aroma of Radharani, and it goes towards Krishna's palace. The wind is going to Krishna's palace, and Krishna smells that wind, and he is going intoxicated. That Krishna, who is very difficult even for munis and yogis who are meditating upon him. But that Krishna is getting captivated by the aroma of Radharani's transcendental body. This is being carried by the winds. So we remember those winds, those places, and we bow down to all of them. यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गं गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्याः नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि. Let us remember Radharani's lotus feet and the dust of her lotus feet, and all the gopis and sakhis and manjaris who partake of this lotus, of this dust of the lotus feet of Srimati Radharani, and we apply it on our forehead. This dust is not an ordinary dust. This dust of Radharani's lotus feet is like a spell. Anybody who puts it on their forehead, Krishna gets attracted to them. Very easily you can achieve Krishna Prem through the lotus feet of Radharani by smearing that dust below her feet. ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायाः सर्वार्थसार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टेश तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने यो ब्रह्म रुद्रशुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरुदारगोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौलिः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिकाचरणरेणुमहं स्मरामि. Let us meditate on the transcendental Vrindavan, divine Vrindavan, manifested in our heart. We are all in which form? Not in this form, not in this body. We are all manjaris. We are all following manjaris, Rupa Manjari, Rati Manjari, Champak Manjari, Manjulila Manjari, and all those other sakhis, all the Ashta sakhis. And whom are they following? They are all following Radharani. Radharani is walking. How old is Radharani? How old are us? We are small. We are 12, 13-year-old Manjaris. Radharani is 16 years old. So you can imagine her youth. It's like a new youth. And she's all wearing beautiful dress. Her hair decked with flowers, long hair, curly, some curls coming on her face. She's smiling, she's happy, she's little naughty like how a 16-year-old girl is. And she's walking with basket in her hand. And we are also walking along with her, carrying a lot of other stuffs. And Radharani is picking flowers in Vrindavan. And when she's picking flowers in Vrindavan, what happens? The trees, they just fall at her feet. They start dropping flowers. And they are so ecstatic that nectar starts oozing out of the trees. And all the swans, the peacock, the bird, the parrot, everybody just gathers there where Radharani is there. And everyone is right now very happy.
Wherever Radharani is walking, we collect that dust and we throw on each other. That kind of Vrindavan where everybody is singing the glories of Radharani. Our ears are only hearing those glories echoing everywhere in Vrindavan. We bow down to that Vrindavan. Radha Karavachit Pallava Vallari ke Radha Padanka Vilasan Madhura Sthali ke Radha Yasho Mukhar Matta Khagavali ke Radha Vihara Vipine Ramatam Manon me. Radharani, we remember her form. She is the ocean of love. She is the ocean of expertise in the arts of love. She is ocean of compassion. She's ocean of mercy. She's an ocean of beauty. She is ocean of radiance. We remember that Radharani. Let this oceanic Radharani always play in our hearts. Vaidagda Sindhu Anurag Rasaik Sindhu Vatsalya Sindhu Ratisandra Kripaik Sindhu Lavanya Sindhu Amrita Chavi Rupa Sindhu Shiradhika Spuratu Meridikeli Sindhu. Now we go to the Leelas, the pastimes. We have been meditating on these pastimes along with Srila Prabodhanand Saraswati. The pastime which we had been doing yesterday, day before yesterday, we saw how Radharani was playing the veena and she was very sad. And after that, Krishna came, Sakhi went, Saraswati Sakhi went and brought Krishna, and then they met. And when they met in Vrindavan, they were smiling, laughing, and very happy. And Sakhi is meditating, Saraswati Sakhi is meditating, and he says, oh, that couple in Vrindavan who is laughing like this, who is talking like this, has stolen my heart. We meditate on this form and we pray to them. Let our hearts be stolen by Sri Radha Krishna. And that Radha is so beautiful. She is radiant like the lightning, yellow colored lightning. And she is forever young. Her beauty is unparalleled. There are so many other gopis and sakhis in the forest, but she stands out. Her shine is brilliant. She's different. She is the most beautiful. There is no words to express her beauty. And when lovingly she looks at Krishna from her side glances, as if she's radiating love. So this Radharani who is standing, whom Prabodhanand Sakhi, Saraswati Sakhi is seeing, this Radharani is not an ordinary Radharani. She is the embodiment of love. Imagine, ocean of love is all contained in that transcendental form. That is Sri Radharani. She is the embodiment of ocean of love. And when she looks at Krishna, that love is just radiating through her eyes. It is drowning Krishna in that ocean of love. And when Krishna lovingly looks at Radharani, he is ocean of bliss, happiness. When they both are together, the Sakhis are looking. When Krishna touches Radharani, Radharani gets goosebumps. When Radharani touches Krishna, Krishna gets goosebumps. They're both thrilled. And looking at them, the Sakhis are thrilled. So looks like Radharani, wherever she glances, wherever she's seeing, she's only spreading that love, as if the whole world will get drowned in that ocean of love. This was when Radharani was there. And then Radharani didn't stop. She came as Chaitanya Mahaprabhu. Every time you will say she came as Chaitanya Mahaprabhu. It was Krishna incarnated as Chaitanya Mahaprabhu. Yes, but when you look at Chaitanya Mahaprabhu, the form only is that of male. The color is of Radharani and the heart is of Radharani.
If it was not for Radharani, how would he do that work of giving love, of distributing love? It's because of Radharani. So she came in that form of Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and distributed that love through that form. So when you look at Radharani's eyes or Gaur Hari's eyes, they are both only radiating love, divine love. And the whole world is just immersed, is getting submerged in that ocean of love. And then, so these are the qualities of Radharani, and she's so compassionate. This is the qualities in her looks. She's very beautiful. She's forever youthful. Not only that, she's freely distributing love. She nobody can understand her. It is not possible to understand her. Even the scriptures couldn't write words to explain Radharani's tattva, Radharani's essence. How can anybody? She's love. How can anybody express love? How can anybody write what is love? How can you? How can you tell how a mother loves a daughter or her son? How can you? Only when you become a mother, you know what is love. So the books also have no words. That is why scriptures can describe in detail events, what happened. Scriptures can describe in detail knowledge, science, what happened, what is happening. But love is an experience. No book can describe love. You have to fall in love to understand love. And Radharani is the embodiment of love. If she becomes merciful on anybody, if she just glances on somebody, that person will be drowned in love. To understand love, you have to just be drowned in love. That is why the scriptures didn't even attempt. She has been hiding. She's been hidden everywhere. Shrila Sukdev Maharaj could not speak on Radharani when he spoke the Bhagavatam, because they say if you would have taken the name of Radharani or started talking about her, probably he would have just stopped talking, because he would be drowned in love. After that, there's nothing. You can't speak anything. And he thought, if I go like this, I'll get into samadhi. Then how will I say the Bhagavatam to Parikshit? And he stopped there. He hid it. That's how secretive it becomes. Whomever she touches, that person will fall into love with Krishna. We are trying to do this every day, but I know it's not possible. Every day I come for the class, I think, what am I going to say? Because reading the shloka and getting into the pastimes and being there, after that, when you have to come and you have to explain, it is tough. How to explain? In that pastime, in that Leela, so many things are happening at the same time, simultaneously. Sometimes after the lecture, I feel, oh, I missed this point, this particular thing, because I'm saying like that, but I'm not able to speak. So it's very difficult to explain love. But whatever drop we get, we try to do that. We try to explain. Okay? We fall down at the feet of these Vaishnava saints, Prabodhanand Saraswati, Shukdev Ji, and other Vaishnava saints. May they bless us. That we all experience, we all be drowned in this 24 hours. We don't want to come out and talk anything other than Radha Krishna. That's it. All right, next one. We'll go to the next one. Dukulam vibhranamatha kuchatate kanchukapatam prasadam swaminyaha swakarataladatam pranayatah स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचये एकचतुरां किशोरीं आत्मानं किमिह सुकुमारीं न कुलये. कल हम लोगों ने 53 इस श्लोक पर एंड किया था, 53वें श्लोक पर एंड किया था, उस पर समाप्त किया था. तो उसमें कल उन्होंने सेवा मांगी थी, मंजरी रूप में सेवा मांगी थी. क्या सेवा मांगी थी? कह रही थी, मैं आपकी
परिचारिका के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगी। हे राधा रानी, क्या आप ऐसी कृपा कर सकती हैं? क्या अपने हाथों से प्रसादी में मुझे अपने वस्त्र दे सकती हैं? प्रसादी वस्त्र जिसको मैं पहन लूंगी। क्या आप मुझे प्रसादी में कंचुकी दे सकती हैं, जिसको मैं पहन करके मैं आपके साथ सदैव रहूंगी? हे राधा रानी, क्या आप ऐसी कृपा हम पर कर सकती हैं? Yesterday when we ended, Saraswati Manjari has kindly requested Radharani, oh Radharani, please, can you make me your forever maid servant? Can you bless me with a with with dresses as prasad? Give me those dresses so that I can wear it. Give me a blouse by your own hands so I can wear it. This is Radharani's prasad, this dress, this blouse, this sari, this ornaments, this everything I want to wear. What you give it to me? Oh Radharani, can you please give that? And Radharani, make me your eternal maid servant. I will always be there for you. With that, she goes today to the next mood. विचिन्वती केशान् क्वचन करजहि कंचुक कपटम क्व चाप्यामुञ्चन्ति कुचकनक दिव्य कलशयोः सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणिमञ्जीरयुगलम् कदा स्यां श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यहमहो। बार बार मांग रही है सेवा। हे राधा रानी, मैं कब आपकी परिचारिका बनूंगी, कब मैं आपकी सेवा करूंगी? सेवा के समय पर क्या करूंगी? मैं आपको आपके नुपुरों को पहनाऊंगी, मैं आपके कंचिकू को पहनाऊंगी, आपका अलंकार करूंगी। हे राधा रानी, मुझे ये सेवा कब मिलेगी? और जब ऐसा आप कह रहे हैं तो उनके अंदर ये जो श्लोक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से एक लीला स्फुरित होती है। तो सरस्वती पाद लिख रहे हैं श्लोक, पहला वाला श्लोक लिखा, हे राधा रानी, मुझे अपनी परिचारिका बना लो, मैं आपके साथ चलने जाती हूँ। और राधा रानी की दी प्रसादी कंचुकी उन्होंने पहन ली। राधा रानी की दी प्रसादी वस्त्र जो है वो पहन लिया और पहनते पहनते पीछे परिचारिका के रूप में चली जा रही है। तब तक लीला खुलती है। लीला में निकुंज में जाते हैं। निकुंज में बैठी है रात्रि के समय, प्रिया प्रियतम मिले हैं और परिचारिका है ये, तो बाहर बैठ गई निकुंज के बाहर, निकुंज के बाहर, और अंदर हंसी बोली ठिठोली सब हो रही है। यहाँ पर इनको हंसी बोली ठिठोली सुनकर के बड़ा आनंद आता है कि अरे प्रिया जी बड़ी प्रसन्न है, प्रियतम बड़े प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है बहुत। काफी देर के बाद, इनको तो सखियों को तो आदत है, खूब लंबा समय बीत जाता है इनका। थोड़ी देर में बहुत लंबा समय बीत गया, तब तक राधा रानी की आवाज आती, आह। तो ये सोचती क्या हो गया, तो इनका ध्यान थोड़ा तंद्रा टूटता है, क्या आह। और वहां से कृष्ण की भी आवाज आती, आह ओह, अरे ये क्या हो गया, इस प्रकार से। जब ऐसी आवाज आती है तो मंजरी को लगता है कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं हो गई, तो भागती है अंदर निवृत्त में। मंजरी तो छोटी है, मंजरी को कभी भी अलाउड है, सखियों को अलाउ नहीं है जहां पर जाने के लिए, मंजरी को अलाउड है। तो कहती है सखी मैं आऊं अंदर, कुछ हो गया क्या? तो राधा रानी बोलती आओ सरस्वती, जरा देखो तो ये क्या हो गया, जरा मेरी मदद करो, सहायता करो। तो मंजरी जाती है अंदर, अंदर जाकर के देखती है, अरे दोनों लगता है एक दूसरे के साथ सोए थे। सोते हुए राधा रानी के बाल भगवान के किसी गले के हार में फंस गया है, और उसी प्रकार से भगवान के बाल वो भी राधा रानी के हार में फंस गए। शायद गलबेले, शायद आलिंगन करते हो या जो भी हो, जिस भी स्थिति में हो, तो इनके बाल उनके चेन में और उनका बाल इनके चेन में। अब दोनों के बाल फंसे हुए, दोनों निकाल नहीं पा रहे, आज निकालेंगे तो दर्द हो रहा है, आ तो मंजरी कहती है आप बैठो अभी शांति से, मैं करती हूँ। तो मंजरी क्या करती, धीरे से बड़े हल्के से जाकर के पहले तो कृष्ण के बाल निकालती है उसमें से, फिर हल्के से ताकि किसी को दर्द ना हो, फिर राधा रानी के बालों को निकालती है। फिर कृष्ण तो
अब उनके बालों को थोड़ा दे देती सवार, वो तो अपने बाल को सवार ही रहे, तब तक राधा रानी की बाल ये फटाफट से मंजरी जो है सवार देती है। ये सब बिखरे थे बाल, फूल वूल सब टूट गए थे, सब अच्छा बाल कर दिया। और साड़ी वाड़ी यहाँ बिखर गई थी, तो साड़ी वाड़ी ठीक कर रही थी। लेकिन जब साड़ी ठीक कर रही थी तब देखा कि कंचुकी वो पसीने से भीगी हुई है। तो मंजरी तो सेवा में हमेशा निपुण है, उसको तो पता है भीगी हुई कंचुकी है, तो कहीं रुकिए ये रुकिए राधा रानी, मैं अभी आती हूँ। और गई और श्याम सुंदर को भी बाहर ले गई। फिर यहाँ पर बाहर आकर के एक दूसरी कंचुकी खूब इत्र में भिगोई हुई, ऐसी इत्र जो श्याम सुंदर को अच्छी लगेगी, खूब इत्र में भिगोई हुई एक नई कंचुकी ला करके तुरंत राधा रानी की पुरानी कंचुकी जो पहले वाली श्वेत में भिगी कंचुकी थी उसका उसने मंगल किया, और ये वाली कंचुकी उसको उनको बांध दी। फिर देखा रे पायल, पायल भी इनका एक पायल निकल चुका था, तो पायल निकाली और दूसरी पायल उनके पैरों में बांधी। ये जो साज श्रृंगार किया, अब ध्यान में ये देख रहे हैं साज श्रृंगार, और तब तक ध्यान फिर टूटता है और कहते हैं कब मैं आपकी परिचारिका बनूंगी, हे राधा रानी, कब मैं आपकी सेविका बनूंगी, कब आप मुझे निवृत्त निकुंज में बुला करके, ये सेवा जो सखियों को नहीं मिलती, अष्ट सखियों को नहीं मिलती, ये सेवा मुझे मिली है, आपकी कंचुकी बदलने की सेवा, आपके पैरों में नुपुर पहनाने की सेवा, प्रियतम के हार में आपके जब केश फंस गए थे उनको निकाल करके उनको संवारने की सेवा। हे राधा रानी, मुझे कब मिलेगा, कब वापस मिलेगी, मुझे अपनी सेविका बना लो, हे राधा रानी। सो मंजरी, सरस्वती मंजरी, she is requesting Radha Rani, make me your servant, I want to be your servant always. And then she was writing the shlokas. When she comes to senses, she becomes he, Prabodhanand Saraswati. Prabodhanand Saraswati is writing the shlokas. And the moment she writes those shloka, oh Radharani, when will I become your servant? When will I wear those dresses? You will give it to me as prasad. I will wear those dresses and I will follow you all the way to Nibrit Nikunj. And while he's writing, suddenly he goes into trance again and he has become Saraswati Manjari. And Saraswati Manjari is now in the Nikunj. It's night time. Radha Krishna have met. They are sitting in their secret chamber, and Manjari has come out. Manjari's duty is outside. She's on the night duty tonight. And when they meet Radha Krishna, they are laughing loudly. They are joking, and we can hear that sound a little bit, And we are also happy. Saraswati Manjari is happy. Saraswati Manjari is happy. Oh, that Shyam Sundar must be talking so beautifully and Radharani is talking so beautifully. Shyam Sundar is 16-year-old, Radharani is 16-year-old, and they're full of love and they're enjoying those moments. And a long time passes by. Saraswati is happy. And she's like, okay, then there is a silence for some time. And she's like, yes, maybe they're enjoying each other's company. And after a long, prolonged silence, suddenly she hears a sound. Ah! And then she hears Krishna's sound. Oh! And she thinks, what happened? As if they're in pain. So Manjari says, Sakhi, you want me to come and help you with something? Is there anything I can do? Radha Rani says, Sakhi, come in, please help us. We are stuck. And Sakhi goes, Manjari goes. Manjari feels so blessed that this place where even those 8 closest Sakhi, Lalita, Vishaka also are not allowed. In that place, a Manjari has been given a chance to come inside to serve. And then when she goes there, she sees, oh, Radharani's hair is stuck in Krishna's necklace, some chain he's wearing, golden chain. And in that, Radharani's hair is stuck. And same way, Krishna's hair is stuck in Radharani's necklace. So they are both stuck now, the hair stuck. And now when they're trying to remove, it's hurting them. So Radharani is, and he's like, making the sound when they're trying to remove the hair. And Sakhi says, wait, calm down. I'll do it for both of you. Don't worry. So first she goes very gently. She takes out, both their hairs are curly. So Radharani just gently takes out Krishna's hair. It's much easier to remove because it's small, it is shorter than Radharani's hair. So she takes
his hair first, he's freed. Then she focuses on Radharani, and then slowly takes out Radharani's each and every hair that is stuck, and then she says, "Oh, Radharani's hair is all disheveled now. Let me just do her hair." She combs her hair nicely, and while she's doing that, she notices, oh, Radharani's blouse is wet out of sweat. She has been sweating a lot, so her blouse is wet. She says, Shyam Sundar, just go out. I need some time with Radharani. And then she goes out. Manjari goes out, gets a new blouse. Very fragrant. It's all having, the blouse is like having good fragrance in it, soaked in fragrance. And then she gets it for Radharani. Immediately she changes that blouse, the dress. She gives her a new dress. And then she looks at Radharani's feet while she's dressing her up, and she says, "Oh my God, one of the anklet is lost somewhere. What happened?" And then she says, "Don't worry, Radharani, I have another set for you." And then she takes out another set of anklets and then puts it on Radharani's feet. And then she says, "Shyam Sundar, now you can be with Radharani again." And she leaves. So she thinks of this. Who is thinking this? Saraswati Manjari. And she's in that form, in that zone, and then suddenly her eyes open. And she starts crying, "Radharani, when will that day come? I will do this seva again. You were so kind on me. You gave me this seva. You were so kind on me. Even the closest Ashtasakhis, they can't go and do this seva, which you give it to me because I'm your maid servant. Oh, Radharani, make me your maid servant. Give me this seva again." And then he writes those lines. "Please make me your maid servant. I want to change your blouse. I want to change your garments. I want to put the anklets on you. I want to decorate you. If your hair gets disheveled, I will comb it. I'll make you ready for Shyam Sundar. Oh, Radharani, make me your maid servant." Next look. Ati sneh, this is sloka number 55. Ati snehada uchchairapi cha harinamani grinatas तथा सौगन्धाद्यैर्बहु भीरुपचारैश्च यजतः परानन्दं वृन्दावनम् अनुचरन्तं च ददतो मनो मे राधयाः पद मृदुल पद्मे निवसतु। कह रहे हैं अतिशय प्रेम पूर्वक और उच्च स्वर से हरिनाम उच्चारण करते हुए उत्तम सौगंधपूर्ण द्रव्यादि अनेक प्रकार के उपचारों से अर्चना करते हुए तथा वृंदावन से निरंतर विहार करता हुआ परमानंद में मग्न मेरा चित्त श्री राधा जी के सुकोमल चरण कमलों में निरंतर अवस्थान करे। इनके मन में इतनी भावना उठी है कि राधा रानी के साथ मैं रहूं, कैसे रहूं, लेकिन होगा कैसे, ये कैसे राधा रानी के चरणों की हम सेविका बन पाए, क्या तरीका है, क्या साधना करनी पड़ेगी। तो इसमें कहते हैं क्या करनी पड़ेगी, वृंदावन में रहना पड़ेगा। तो मेरा मन हमेशा वृंदावन में रहे। पहली बात, मेरा मन हमेशा वृंदावन में रहे। दूसरा क्या, अनेक द्रव्यादि से उपासना करनी पड़ेगी। तो मेरा मन हमेशा इनकी उपासना करता रहे। उपासना लेकिन करते समय और क्या करना चाहिए, कहते हैं हरि नाम, लिख रहे हैं अति स्नेहाद उच्चैरपि च हरि नामानि गृणतस्। बार बार जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करते करते और अनेक सौगंधाद्यै बहुर्भी उपचारैश्च यजतः, अनेकों सौगंधपूर्ण द्रव्यादि से उपचार, सुगंधादि द्रव्यादि के अनेक प्रकार के उपचारों से अर्चना करते हुए वृंदावन में मैं निरंतर विहार करता रहूं। तो कैसे हम पाएंगे, भगवान राधा रानी के चरणों को कह रहे हैं
एक ही चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अरे जोर जोर से हम हरि नाम ले सकते हैं, उच्च ही अपी हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और क्या रास्ता है? और कुछ रास्ता नहीं है। कहते यही एक सबसे सरल रास्ता है। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें हरिदास ठाकुर का, जब हरिदास ठाकुर की का चरित्र आता है तो उसमें एक कुछ श्लोक आते हैं, तो उसमें यही कहते हैं कि, आपको सुनाती हूँ, रुको। भजनेरा मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भजन जो है, बहुत सारे प्रकार के भजन हैं, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ भजन है उसमें कहते हैं, सबसे जो नवविधा भक्ति का जो भजन है उसमें कहते हैं नाम संकीर्तन, बार बार नाम लेना। नवविधा भक्ति ये श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है नवविधा भक्ति में? तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो नवविधा भक्ति ये तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन इसमें भी श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरापराधे नाम लैले पाया प्रेम धन। सुबह भी हमने यही आज चर्चा की थी नाम पर, सुबह से यही चर्चा चल रही है, कैसे नाम लेना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे। सुबह भी मैंने यही कहा, निरपराध होकर के। जिनका निरपराध चित्त होता है उनको देवता के दर्शन हो ही जाते हैं। तो नाम जपना है, और चित्त कैसा होना चाहिए? निरपराध। निरपराध है नाम ले ले पाया प्रेम धन। जो निरपराध होकर के नाम लेता है उसे ही प्रेम धन, ये कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। निरपराध यानी किसी के भी प्रति अपराध नहीं करना, किसी के भी। ये भी कहना, मुझे तो लगता है कि हम वैष्णव हैं और दूसरे वैष्णव हैं, ये भी अपराध की कैटेगरी में है। मन से ही निकाल देना ये बातें, ये भेदभाव मन में बैठा लो। जो विष्णु से आई, जो कुछ भी विष्णु से आया है वो वैष्णव है। बैठाओ इस बात को मन के अंदर, जो कुछ भी विष्णु से आया वो वैष्णव है। अब बताओ कि क्या ऐसा चीज है जो विष्णु से नहीं आया है? बताओ ऐसा कोई है? तो कौन है अवैष्णव? कोई अवैष्णव नहीं है। कहते हैं कोई अगर नाम मात्र के लिए भी, इसी में आएगा, इसी में भी है, इसमें भी है और अलग जगहों पे भी पढ़ा मैंने, कि नाम मात्र के लिए भी किसी ने अगर वैष्णव का भेष बनाया है, पता है अभी वो वैष्णव लेकिन भेष में, तो भी उसको सम्मान दो। किसी को जजमेंट मत करो, कौन कैसा है, हमको क्या करना। हमको अपनी साधना से मतलब है, अपने नाम से, अपना नाम जपो, सब पर दया करो, बिल्कुल किसी के प्रति अपराध नहीं। अपराध यानी ये भेदभाव, बस और कुछ नहीं। ज्यादा 10 अपराध के चक्कर में पड़ते हैं, कई बार अपराधी भावना से लोग चलते हैं। मुझे वो बहुत अपराधी भावना मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं अपराधी हूँ, हम बड़े अपराधी हैं, हम बड़े अपराधी कहते रहते हैं, लेकिन वो बोलते बोलते और करते जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। हम क्यों अपराधी? क्योंकि भगवान का स्मरण में क्या कमी है क्या? ये बोलने के बजाय हम अपराधी, हम अपराधी, बार बार ये कहो ना, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के, सब लोग भगवान के, हम भगवान के, आप भी भगवान के, सब भगवान के। आप ऐसे बोलते जाओ, अपराध नहीं बनेंगे। सबको जज मत करो, संतों को मत जज करो। कोई नाम मात्रा का कपड़ा पहना है, पता है ऐसा लग रहा है हमको कि नहीं वो भक्ति उसकी कम है, नहीं, आपको नहीं पता आपको वो क्या कर रहा है। कोई नहीं जप रहा है शायद, लेकिन उसकी भक्ति बहुत अंदर में स्ट्रांग है। आप क्या जानते हैं किसी के बारे में? क्या जानते हैं? और ये भक्तों से ये अपराध हो जाता है कई बार। एक बार हमारी बिल्डिंग में किसी की मृत्यु हो गई, तो वहां हमारी बिल्डिंग में दूसरे एक भक्त रहते थे, तो उनके मुंह से निकल गया, अरे इसकी तो मृत्यु हो गई, ये तो नरकों में जाएगा। मैंने कहा आप कैसे बोल सकते हो नरकों में जाएगा? आपको डिपार्टमेंट दिया है क्या?
एक तरफ माला जपते हैं और मुंह से दूसरा ऐसे बोलते हैं। किसी की भी जिंदगी का क्या आपने लेखा जोखा लिख के रखा है क्या? यमराज के डिपार्टमेंट में आप नहीं ना, तो आपको कैसे पता? उस व्यक्ति ने कभी, आपको क्या पता, कोई उसके पास, उसने कभी किसी अच्छे कर्म को किया होगा, उसके मृत्यु के समय पे कोई आकर के नाम बोल करके गया होगा, उसने नाम नहीं लिया होगा, कोई उसके सामने नाम बोल करके गया होगा। आज ही तो हम उसमें पढ़ रहे थे गीता भागवत क्लास में, कि किसी दूसरे को नाम जपते हुए देख रहा है कोई, और फिर उसकी मृत्यु होती है, उसमें भी उसको वैकुंठ मिल जाएगा, उसको भगवान का लोक मिल जाता है। इतनी तो नाम की महिमा है। अजामिल के मुख से ऐसे ही निकल गई, अजामिल मुक्त हो गया। तो हम लोग जो जो साधन मार्ग में चल रहे हैं, बहुत ऊंची बात कर रहे हैं आजकल हम लोग, है ना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, डेली रोज दे रहे हैं हमको मंजरी भाव। कभी भी ये घमंड आने मत देना कि अरे हमको कोई बहुत ऊंची चीज मिल रही है, नहीं आने, मिल तो रही है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन हमको वो घमंड नहीं आने देना अपने अंदर। अहंकार से बचना, अहंकार से बचना। जिसको जो मिल रहा है, भगवान की वो कृपा है, उनको वही प्रसाद है। जैसे हम जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, अलग अलग आइटम होते हैं प्रसाद में ना, कहीं पूड़ी होता है, कहीं सब्जी होता है, कभी केक होता है, कभी कुछ और मिठाई होती है, लेकिन प्रसाद लेते समय सबको सब कुछ मिल गया, कोई गारंटी नहीं है। जिसको जो देना है भगवान को, उसको वो दे रहे हैं। तो कोई यदि सख्य भाव से भगवान को पूज रहा है, नमस्कार है। कोई यदि वात्सल्य भाव से पूज रहा है, नमस्कार है। कोई ऐश्वर्य भाव से पूज रहा है, नमस्कार है। कोई क्रिश्चियन है और वो कृष्णा को नहीं पूज रहा है, उसको भी नमस्कार है, क्योंकि वो क्रिश्चियन भी आया है भगवान से ही। कोई मुसलमान है और वो कृष्ण को नहीं पूज रहा है, उसको भी नमस्कार है, क्योंकि वो मुसलमान तो देह से है ना, आत्मा तो वही कृष्ण से आएगी। जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको ये बातें समझ में आने लगती है, जो सब में उसी कृष्ण को देखने लगते हैं, सब में उसी का दर्शन करने लगते हैं, वो इन भेदभावों से ऊपर उठ जाते हैं। सभी भगवान के, मैं भगवान का, सभी भगवान के, मैं भगवान का, सभी भगवान के, सब मेरे। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः, सब मम प्रिय सब मम पूजाए। सब भगवान के, सब मैं भी भगवान की, तो सब भगवान के, तो किसी से भी क्यों भेदभाव करें, क्यों अपराध? ऐसे जब हम हो जाएंगे ना, तो अपराध आएगा ही, होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। और दूसरा, अपराध हमसे हो रहा है तो हमने अपने मुंह से और अपने मन में किसी और बातों को बैठा करके रखा है। सीधी बात, आपके मन में कृष्ण नहीं है, इसीलिए आपके मन में, आपके मुख से किसी और की बात निकल रही है। जिसने सिंसियरली कृष्ण को पकड़ लिया, उसके मुख से कुछ और बात निकलेगी ही नहीं। मत कीजिए अपराध, है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि मैं कैसे राधा रानी के सेवा को पाऊं। कह रहे उच्च उच्च ऊंची आवाज में, उच्च ही कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। एक बार हरिदास ठाकुर को पूछा उन्होंने, जब वो जोर जोर से कीर्तन करते थे, कि आप जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं? अरे जपना है तो मन में जपिए ना अपने। तो उन्होंने कहा कि जप करके, मन में जप करके तो मैं केवल अपना कल्याण करूंगा, लेकिन मैं जोर जोर से जब जपता हूं तो बहुतों का कल्याण होता है। अब ये ग्रंथ में अकेले पढ़ लेती, लेकिन जब हम साथ में पढ़ रहे हैं, अभी भगवान की कुछ इच्छा हुई है, मर्जी हुई है, तो उन्होंने यूट्यूब प्रसारण करवा दिया, तो जो प्रेमी भक्त होंगे वो सुनेंगे, उनको भी आनंद मिलेगा। तो जोर से बोलने में मुझे तो आनंद आया ही आया है, मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। पहली बार भी पढ़ा, पहले पहले हम पढ़ा था, हमने हमारे ग्रुप में पढ़ा था, तभी यूट्यूब पे नहीं थे। फिर दूसरी बार अब ये पढ़ रहे हैं, और आपको पढ़ाने के पहले मैं कितनी बार पढ़ लेती हूँ। कितना आनंद आ रहा है। और ये आनंद जब सबके साथ शेयर करते हैं तो वो आनंद मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए जोर जोर से पढ़ना, ग्रुप में पढ़ना, साथ में सत्संग करना, ये अच्छी बात होती है। इससे बहुतों का कल्याण होता है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं जोर जोर से इसलिए जपता हूँ, जब जपता हूँ तो मैं अगर अकेले जपूंगा तो वाणी सिर्फ मुझ तक है, लेकिन जब मैं जोर से हरि कीर्तन करता हूँ तो वो वाणी कहाँ कहाँ तक जाती है, कितने जीवों का कल्याण करती है। हमें जो नहीं दिखाई देते, कितनी तड़पती हुई आत्मा हमारे आजू बाजू घूमती है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब उनके कानों में भी, वो भी जब हरिनाम सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है। कितने कीड़े मकोड़े, वो भी हरिनाम सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है। पक्षी, हवा, पेड़, सबको आनंद मिलता है जब वो हरिनाम सुनते हैं। आपकी हरिनाम जोर जोर बोलते बोलते आपका दान पुण्य सब ऐसे ही हो जाता है।
आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी तो हरि नाम की महिमा है। तो सेम चीज प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उच्च, जोर जोर से उच्चे ही क्या करूंगा मैं, कह रहे हैं कि अति स्नेहाद उच्चैरपि च हरिनाम हरिनामानि गृणतस, खूब स्नेह पूर्वक जोर जोर से मैं हरि का नाम का उच्चारण करूंगा, और ऐसे करने से ही तो मुझे जाकर के शायद उनके, मेरा चित्त हमेशा श्री राधा के सुकोमल चरणों में रहेगा, मेरा चित्त हमेशा श्री राधा के सुकोमल चरणों में अवस्थान करे। प्रबोधानंद सरस्वती was in the mood, and in that mood he is serving her, and he says, and then again his eyes open, he writes the lines what he just saw, and he's praying, oh Radha Rani, please make me your servant, I always want to be your servant. And then when he's opened his eyes and he's writing, tears are flowing through his eyes, he's like, how can I make myself qualified, how can I make myself qualified to be her forever servant, what can I do that I never forget her, what can I do that my mind will always be settled, will always be fixed at the lotus feet of Srimati Radharani? What can I do? And then he says, I will sing loudly. I will do Sankirtan, Nam Sankirtan. I will sing loudly, I will chant loudly, and I will worship Radharani. And I will take my mind in the groves of Vrindavan. My mind will always wander in the forest of Vrindavan. I want nothing. Let my mind be always wandering in Vrindavan. Let my mind always worship Srimati Radharani. Let my tongue always sing the glories of the couple. Let me always chant the Hare Krishna Mahamantra. Let me always do the Sankirtan, because that's what has been taught by Chaitanya Mahaprabhu. That's how we can achieve the love of Radharani and Krishna. There's no other way. That is what Radharani has become Krishna. Radharani has become Krishna Chaitanya Mahaprabhu. I know every time you will say, why are you saying the opposite way? But that is how I see. What can I do? Chaitanya Mahaprabhu, people will say he's Krishna incarnate. But when I see he is Radharani with the heart of Radharani, and Radharani has come to tell us what love is, and how do you find that love? You find that love the same way as Chaitanya Mahaprabhu is singing loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He gave us that. Chant loudly, cry, dance, sing loudly, say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Fill your heart with that vibration, your mind with that vibration. When you think of Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, Jagannath is standing in front of Jagannath. Who is Jagannath? Jagannath is Krishna. And here Chaitanya Mahaprabhu, she is Radharani, dying to meet Krishna. In that Leela, Jagannath Prabhu is standing there. Jagannath Bhagwan is standing there. Chaitanya Mahaprabhu is standing here, and he's crying. He wants to just go and meet Krishna. So who is that Chaitanya Mahaprabhu? That is Radha. That is Radharani. She came in the form of Chaitanya Mahaprabhu to teach us. You can get that divine love just by chanting sincerely Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And do that sincerely. Nothing else. And do it without any offenses. There are many offenses mentioned, but I don't talk too much on the offenses, because I don't want your mind to go on offenses. I want your mind to go on Krishna and Radha.
Make it a point that you will not criticize anybody. You will not judge anybody. Everybody belongs to Krishna and Radha. Come out of that concept of this is Vaishnav and this is not Vaishnav. Only those persons who are chanting are Vaishnavs and the other who are not chanting are not Vaishnavs. Come out of that concept. Make only one thing in your head. Everything that belongs to Vishnu is Vaishnav. Everything that belongs to Vishnu is Vaishnav. What did I say? Everything that belongs to Vishnu is Vaishnav. Now you tell me one thing. Is there anything in the world that does not belong to Vishnu? Everything belongs. Even the person who is not chanting, his soul, whom does it belong to? It belongs to Vishnu. It belongs to Krishna. Is Krishna not sitting in that person's heart, whom you say is a Vaishnava, whom you say is sinner? Don't do that. If you make that rule in your life, I'm not going to say anything wrong about anybody in this world because everything is my Krishna's. I belong to Krishna. They all belong to Krishna. My role in this world is only to chant his name, is to chant his glories. My mouth should not talk about anybody else, anyone else. No, it has to only chant about Krishna. If I am forced to talk about people, then I must first establish in my mind, even if I'm talking about this person also belongs to Krishna. Then I start speaking. Then you will be purified. You will not do any offense. Make this thought. You will not do any offense to anyone. It will become natural to you. People talk about offenses, but thinking about offenses, no, it's not going to help. Thinking about Krishna and thinking about Krishna in everyone is going to help. And you keep chanting sincerely, keep chanting sincerely. Keep your heart pure, keep your mind pure. Don't judge, don't criticize. You follow your path. That's it. Become like Haridas Thakur. Become like Haridas Thakur. You read his stories in Chaitanya Charitamrita. People, when insulting him, and he says, I'm not worried about these insults. Others started fighting for him. He says, don't fight for me. These insults are nothing. Tarorapi Sahishnuna. Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnuna, Manina Manadena, Kirtanya Sadahari. Always have that humble attitude. Humbler than the blade of grass, tolerant than the tree. Give respect to others, don't expect anything. And always, always, always chant the Lord's name. That's the way. That's the only way you can achieve this Manjari Seva. This Manjari Seva. It has been not very openly discussed anywhere. I have, in the first class and all, I have taken shlokas to tell you guys. But as we read the books further, you will know. When Chaitanya Mahaprabhu came, Radharani showed us the way, sincerely chanting the name Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant it. Don't talk anything worldly. Don't take your mind anywhere. Fix your mind on the lotus feet of the couple. They will give you so much love. They will give you so much love. If you want Radharani's love, look at Krishna. If worship his feet. If you want, and when you start worshipping Krishna, he will give you Radharani's love. We all know it. We have all done the journey. We first fell in love with Krishna, and then we fell in love with Radharani. And when we fell in love with Radharani, we fell in love with Krishna again. That's how the love goes here in this world. Nija Prana Ishwar. I'll go to the next shloka. So he's saying, I'll just finish with that one. He says, the only way to achieve Radharani's lotus feet is to chant loudly the Hare Nam Sankirtan and worship Radharani with whatever you can have and put your mind always in Vrindavan. Okay. Nija Praneshwarya Yadyapi Dayani Yamiti Mam Muhuschumantya Lingati Suratamadvya Madayati Vichitram Snehadhardim Rachayati Tathapya Adbhutagate Tavaiva Shri Radhe Padaras Vilase Mama Manaha.
यह मंजरी परिचारिका, अर्थ पढ़ देती हूँ पहले। मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा की दयनीय कृपा पात्री है, ऐसा समझकर श्री कृष्ण यद्यपि मुझको बार बार चूमते हैं, आलिंगन करते हैं, सुरत माधवी से मदोन्मत्त करते हैं और विचित्र स्नेह संपत्ति से पूर्ण करते हैं, ऐसा होते हुए भी हे श्री राधे, मेरा मन तो अद्भुत विलास शालिनी आपके चरणारविंद के रस में विलास करता रहता है। कह रहे हैं हे राधा रानी, सीन वही है, भाव में गए कि मैं एक ही काम करूंगा, मैं केवल हरि नाम संकीर्तन करूंगा और मेरा मन कभी वृंदावन से बाहर नहीं आएगा, राधा रानी के चरणों से दूर कभी भी नहीं जाएगा, ऐसा कह के लिख रहे हैं। और लिखते ही फिर भाव में चले गए। भाव में चले गए तो अब देख रहे हैं कि निकुंज है, राधा कृष्ण बैठे और मंजरी सेवा कर रही है। तो कृष्ण इनको देखते हैं, मंजरी को, सरस्वती को, और इनकी सेवा भाव को देखते रहते हैं, एकटक निहार रहे हैं। कितने प्यार से ये राधा की सेवा करती है, खोई रहती, कुछ भी कर सकती राधा के लिए। तो जब ये ऐसे देख रहे हैं तो मंजरी ने भी देखा इनको, कृष्ण को, कि मुझे ही देख रहे हैं एकटक, पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोली नहीं, चुपचाप सेवा कर रही। तो राधा रानी देख रही हैं, तो राधा रानी ने ऐसे इशारा किया कि देखो मेरी सेवा ये बहुत करती है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको अपनी सबसे प्रिय वस्तु गिफ्ट कर दूं आज। और सुन रही मंजरी ये बात, तो मंजरी के मन में थोड़ा उल्लास होता है, अच्छा अपनी कोई प्रिय वस्तु देने वाली है आज, प्रसादी। तब तक राधा रानी बोलती है, मेरी तो प्रिय वस्तु श्याम सुंदर तुम ही हो, और मुझे तुम्हारा आलिंगन बहुत अच्छा लगता है, और तुम जो मुझे चुंबन करते हो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो श्याम सुंदर मैं सोच रही हूँ आज मैं तुम्हारा आलिंगन इसे प्रदान कर दूं, तुम्हारा आलिंगन। तो श्याम सुंदर एक काम करो, तुम ही मेरी सबसे प्रिय वस्तु हो, तुम ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, तो जो आलिंगन सुख तुम मुझे देते हो आज तुम मंजरी को दे दो। अब श्याम सुंदर, अच्छा राधा रानी ये ठीक है, बुलाते सरस्वती। श्याम सुंदर बोलते सरस्वती इधर आओ, और जाते हैं सरस्वती के पास। सरस्वती शर्मा जाती है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों को क्या ठिठोली चढ़ी है। राधा रानी की तरफ देखती है, क्या बोल रही हैं आप। राधा रानी बोलती कोई नहीं कोई नहीं, श्याम सुंदर ही है, तुम भी तो जानो इनका प्रेम क्या होता है। अभी पहले कहा था ना कि राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए तो राधा रानी का प्रेम करो, और राधा रानी का प्रेम चाहिए तो कृष्ण का प्रेम करो। तो राधा रानी बोलती है कोई नहीं, तुम भी तो जानो कृष्ण प्रेम क्या होता है, देखो तो तुम। सरस्वती कहती नहीं मुझे नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण भी यहाँ से आते हुए पकड़ते हैं इसके हाथ, अरे तू आ तो मेरे पास, और खींचते हैं ऐसे हाथ लेकर के, हाथ को ऐसे चुंबन देने जाते हैं। तब तक सरस्वती वहां से छुड़ा लेती है, कहती नहीं स्वामिनी नहीं, क्षमा कर दो मुझे, आपकी अगर इतनी इच्छा है मैं आपके मान रख देती हूँ, लीजिए। आती है कृष्ण के पास, कृष्ण केवल उसका हाथ लेते हैं, पकड़ते और अपने से ऐसे थोड़ा सा आलिंगन देते हैं। बोलती हे स्वामिनी मैंने आपकी मान रख दी, लेकिन मैं आपसे कैसे कहूं, एक आपके चरणों के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप दोनों जब प्रसन्न रहते हैं, मैं आप दोनों को प्रसन्न देखना चाहती हूँ, इसी में ही मुझे संतुष्टि हो जाती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों के प्रेम को देखते रहूं, यही प्रेम चाहिए मुझे बस। ये तो आज आपने मुझे जो मान दिया, श्याम सुंदर ने जो मान दिया, मुझे खींच करके अपने पास ले आए, ये तो राधा रानी आपकी कृपा है। लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में आप मुझे रहने दीजिए, बस यही मेरी इच्छा होती है। श्याम सुंदर देखते हैं कितना प्रेम करती है, बलिहार ऐसे प्रेम पर। कैसा ये राधा दासिया है, ये क्या है, ये कुछ और मांगती ही नहीं है। मैं भी इनको, राधा रानी के कहने पर मैं अपने आप को देने को तैयार हूं इनको, और ये कहती नहीं, हमें तो बस राधा रानी के चरणों में की दासी बना करके रखिए। ऐसी दासी भावना होती है, ऐसी मंजरी की भावना होती है, ऐसा उनका राधा रानी के प्रति प्रेम होता है। दोनों मिलके भी राधा राधा ही करते रहेंगे। कृष्णा भी और वो भी।
वो भी आलिंगन में राधा राधा ही दोनों का जाप चालू रहेगा. दोनों का जाप राधा राधा चालू है. All right. So Saraswati, she's writing. He comes back to his senses and he becomes Prabodhanand Saraswati, and he's writing that I will constantly chant. I will chant the Harinam constantly. I will worship Radharani, and I will not allow my mind to go out from Vrindavan. I will stay in Vrindavan, and my mind will constantly think of Radharani's lotus feet. And he's writing all these lines. And suddenly, he gets into that trance again. And he sees so in the Nikunj, Radha and Krishna are sitting together. And Saraswati is there. She's doing her service. Maybe she's applying, maybe she's dressing up Radharani, or she's doing her sari, or maybe hair, or whatever service she's doing there. And Krishna is looking at Saraswati. And Krishna is thinking, how much does she love Radha? All these manjaris, how much do they serve Radharani? What they don't even look at me when I'm sitting here. I am very attractive to everybody. Everybody wants to look at me. But this Radha Manjaris, Radha Dasis, they won't even look at me when they are serving at Radharani's lotus feet. All the gopis there, they are attracted towards Krishna. But Radha Dasis, they are only busy with Radharani. So Krishna is looking at Saraswati with that eyes of how she's involved in Radharani, how engrossed she is. And Radharani looks at Krishna. And Radharani looks at Saraswati. And Radharani just wants to have some fun. They wanted to mock Saraswati just for fun. So Radha said, Saraswati, I'm very happy with you today. Saraswati is also happy. Thank you, Radharani. Saraswati, I want to give you the best gift I have. The best thing, my most favorite thing I'm going to give you today. Saraswati thought maybe something very nice she will give. Saraswati was very happy internally. Oh, Radharani is going to give me something nice. And that to her best thing. And then she looks at Krishna. Radharani looks at Krishna. Krishna, I have decided to give my best thing to Radha, to Sakhi today. And you know what my best thing is? Krishna, my most best thing is you. And what I enjoy about you is, Krishna, the hugs that you give me. So 2 things I enjoy a lot. I like looking at you. I like your hugs. And I like when you kiss me. So these are the 3 best things, Krishna. So I'm thinking I'm going to give these 3 best things to Manjari. And Manjari looks at, Manjari hears this talk and she's perplexed. What just happened? What is Radharani talking? Manjari is like, no, Radharani, what are you talking? No, don't talk like that. This is not going to happen. Radha says, no, I said, you are my Sakhi, you are my servant. You should take what I give you. You can't say no to me. And then she tells Krishna, Krishna, if you love me, show that love to my servant. She has, to my maid servant, to my Manjari. She has to become happy. The way you make me happy, make her happy also. So these 2 are doing this constantly, and Manjari in between is like so perplexed, like, what is happening? I don't want this. Where are you putting me? This is really not required. And Manjari is like, please, Radharani, I don't want this. All I want is the service of your lotus feet. I know you want to give, but I don't want this, please. And Krishna doesn't stop there. He comes and he holds Sakhi's hand. Manjari's, Sakhi, come close to me. Don't worry. Your master, Radharani, has told me to do this. Don't worry, she won't get upset. Come to me, come closer. And Sakhi and Saraswati is like, no, Krishna, I don't want to do this, please. And where is Krishna going to listen? He just holds her hand, Manjari's hand, and takes her closer and then holds her tightly, gives her an embrace, and then gives her a kiss on her hand. And Sakhi, Manjari gets, she's like so nervous, like, what's happening? I don't want this.
She's so shy, she's so embarrassed. And then she looks at Radharani with the pitiful eyes. Oh, Radharani, please, where have you put me? I don't want this. Then she says, Radharani, you wanted to give me your best thing. You wanted to give me his hug. You wanted to give me his kiss. He has done that now. He took me. He gave me the shoulder tap. He gave me the hug. He has kissed my hands. Now I'm very happy, very satisfied, Radharani. I respected whatever you told me. I took it. But that's all, Radharani. I am not craving for this. This is not my desire. I only crave for your lotus feet. Our position is at your lotus feet. Only you alone are entitled for Krishna's hugs and embraces and kisses. His full love is for you. My sincerity, my loyalty is towards your lotus feet. I'm very thankful that you gave me this today. I'm thankful to both of you, but Radharani, I don't desire this. Always keep me at your lotus feet. That's my only desire. So this is how the Manjaris do the seva. Even if Krishna is coming to give this, Manjaris are like, no. We belong to Radharani. Give all the embraces and hugs to Radharani. That's how Manjari's mindset is. So clean, so pure, so pious. And she says, and and they get 10 just for the record, they get 10,000 times more bliss than Krishna. Then what bliss she will get now, the way she is serving Radharani, she gets 10,000 times more bliss, because she gets the bliss that Radharani gets, and then she multiplies it and gives to her Manjari. So we can imagine how much more they get. So she says, you take care of me so well that I don't need anything else. yes, that's how it is. It's like when we go and see the movie, there's a movie and the actresses, there is some good scenes between them. Then the audience enjoys it more than the actor and actresses. So that's how it is here. Our actor and actress is Radha and Krishna. Our hero heroine is Radha Krishna, and they love each other. Then we are all watching and hearing all the stories. We enjoy it more. The audience enjoys it more and more. So Manjaris are like the audience there. They are enjoying that more. They don't want to be actor. They just want to be acting, the role of servant. That's all. So let's go to the next one. Oh, it's already time up. Okay, the next one is very beautiful. Since I said I'll just read the shloka and we'll do the leela tomorrow. Pritim kamapi nama matra janita prodamaro modagamam radha madhavayoho sadaiva bhajito kaumara aivojvalam vrindaranya navaprasuna nichayananiya kunjantare gudham shaishava khelanairbhat kada karyo vivahotsavah. कुमार अवस्था में ही परस्पर किसी अनिर्वचनीय श्रृंगार रसमयी प्रीति को धारण करने वाले श्री श्री राधा माधव के श्री विग्रह में के विवाह का उत्सव कराऊंगी। श्री श्री राधा माधव के श्री विग्रह में के बाद, हाँ कह रही हूँ, फिर से करते हैं। श्री श्री राधा माधव के श्री विग्रह के में सदैव एक दूसरे के नाम का श्रवण करने मात्र से प्रोद्दाम प्रचंड रोमांच का उद्गम हो जाता है। अहो, ऐसा कब होगा? मैं वृंदावन से नए नए खिले फूलों के ढेरों को लाकर बचपन के खेल खेल में निकुंज के भीतर छिपा करके श्री श्री राधा कृष्ण के विवाह का उत्सव कराऊंगी। तो भाव लीला में चली गई और ये प्रेम की लीला हुई और फिर उनको याद आ रहा है, मुझे तो ये सब नहीं करना, मुझे ये क्या कर रही है राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण को कह रही है मुझे पकड़ लो, अरे मुझे तो ये नहीं करना, मुझे तो इनका विवाह कराना है, इनका गठबंधन कराना है। तो उन्हें स्मरण आता है कि जब ये एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखते कैसे भाव में खो जाते हैं और भाव में खो करके
बचपन में ऐसी खेल खेले हैं कि इनका विवाह कराया है, तो उन्हें वो समझ में, उन्हें वो स्मरण हुआ आता है, कहते हैं मैं तो केवल इनका विवाह कराना चाहती हूँ और इनके विवाह के समय पर इन पर फूल फेंकना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो कल वो विवाह वाली लीला को हम लोग कल फिर अच्छे से पढ़ करके उसका आनंद लेंगे। I'll explain in this another shloka where we are ending today. In shloka number 57, Saraswati Sakhi says, Prabodhanand Saraswati, is in the mood that just the scene happened. Krishna is coming and holding her hands. And she's like, no, I don't want to hold. And then she comes back and then she writes. And then suddenly again she goes in the mood. She's like, oh, Krishna just came, touched my hands, and I was saying no. And Radharani, what is she doing? She sent Krishna to me to embrace me. No. I am not looking for this. My mind is looking for those times when they were small, like kids, Radha and Krishna, and we used to take them in the groves of Vrindavan. And while we were playing with them, they would not even realize. And all Sakhis and Manjaris will used to get them married. And we used to get them married and take flowers and throw on the married couple, and they would not even realize. And when they realized that we married them, they would get angry at us. When small kids, when we do all that pairing of small kids, they get very angry. So she's like, I want to only relish those pastimes where I am seeing Radha Krishna are getting married as kids, and I have flowers in my hand and I'm throwing it on both of them, and all the Sakhis are also having flowers and they're getting them married. So this marriage leela, marriage pastime, we will relish it tomorrow in tomorrow's class. Okay. Jai Shri Krishna. Will end the class now. Hari Bol. राधे राधे। हरि बोल। थैंक यू स्मिता जी। हरि बोल। हरि बोल। Hari Bol, Radhe Radhe.